Everyone. Today I'm here to speak about two very important topics, that is the power of positivity and openness. Now, what does positivity really mean? हमने सुना होगा काफ़ी बार कि लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, डोंट लुक एट इट लाइक अ प्रॉब्लम एंड ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो सब ठीक हो जाएगा. बट इज़ इट रियली दैट वे? डज इट रियली वर्क लाइक दैट? I don't think so. Positivity is not something that you can just think about. Rather, I would say it is like a state of being. So जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आप एक स्टेट में होते हैं जिस स्टेट में आप बेटर सोच पाते हैं और आपको दुनिया की अंडरस्टैंडिंग एक बेटर पर्सपेक्टिव से मिलती है. सो दैट इन माई ओपिनियन इज़ पॉजिटिविटी. ऑन द अदर हैंड, ओपननेस आई वुड से इज़, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेल्फ रिलायंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. दैट इज़, हम इतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे और भी लोग हैं और हम उनसे हेल्प ले सकते हैं अगर हम किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में हैं तो. बट वेट, लेट्स टेक अ मोमेंट एंड थिंक कि डू वी रियली कनेक्ट ओपनली एंड डू वी रियली थिंक दैट हम किसी से मदद मांग सकते हैं? क्या हम इतने ओपन हैं कि हम ईज़िली किसी से भी हेल्प ले सकते हैं? I don't think so, because many a times we feel that कि हम खुद की मदद कर लेते हैं तो I don't think we need help. So ऐसा कई लोगों को लगता है, but that is not really right. Not really right in the sense कि हमें इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि we live in a world that is connected and there are other human beings around us. Remember, ultra independence is almost like a self-inflicted misery, and it doesn't really work that way. So moving on, positivity and openness are really connected. So let's explore कि ये दोनों topics कैसे connected हैं. मैं आपको 2-3 pointers बताऊंगी जिससे आपको help होगी ये जानने में कि how is positivity connected to openness and how one brings the other. So the first topic is positivity brings openness. So for example, imagine that you are in a situation where there is no way out or there is no escape and the only way out is to deal with the situation. अब ऐसी situation में आप क्या करेंगे? आपके पास कोई option नहीं है. So looking at it from a solution perspective is really helpful, I would say, rather than looking at it from a problem perspective कि उस problem को as a problem नहीं देखे, उसमें उसको एक opportunity या एक solution पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो शायद हमारा दिमाग ज़्यादा ओपन रहेगा फॉर बेटर एंड मोर वाइडर आइडियाज़. एंड अगर हम अपना माइंड ओपन रखेंगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प अस कनेक्ट एंड टेक हेल्प फ्रॉम मोर पीपल दैट वी नीड टू सॉल्व द सिचुएशन. कभी कभी हमसे अकेले से सिचुएशन सॉल्व नहीं हो पाती, लेकिन अगर कोई है जो हमें हेल्प कर सकता है तो व्हाट्स द हार्म? So just take that help and don't inflict yourself with misery for just being so independent कि हमें किसी की help चाहिए ही नहीं. So be positive, be more open, and it will attract people to help you and it will also help you take help from other people. Second point is openness helps us build positive relationships. So when we are open through our mind, we think about the world better. वी थिंक इन अ वे जिसमें हम ज़्यादा एडजस्टिंग हो जाते हैं, ज़्यादा वेलकमिंग हो जाते हैं. एंड ये नेचर अगर हम अडॉप्ट करने की कोशिश करें तो इट विल हेल्प अस बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद आवर लव्ड वंस एंड हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े शायद कम हो जाएं एंड वी कैन हेल्प बिल्ड मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. द नेक्स्ट इज़, it really brings us closer to the world. The world we live in is where there are other human beings, as I said, and these all of us are connected through one common thread, that is the human race. So it's not like कि उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं उसकी क्यों करूँ, या मेरी कोई मदद नहीं करता, I can figure it out myself. No, it's not that. You don't have to be so hard on yourself, right? We have spoken about self-compassion, and self-compassion comes when you are open to take द हेल्प दैट इज़ अराउंड यू. समटाइम्स हम देख ही नहीं पाते कि दूसरे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए आजू बाजू, और हम खुद से ही ये अज्यूम कर लेते हैं कि नोबडी विल हेल्प मी एंड आई हैव टू फिगर इट आउट माई सेल्फ, बट इट्स नॉट लाइक दैट. सो अगर हम देखें, इफ़ वी आर मोर ओपन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, इट विल हेल्प अस कनेक्ट बेटर टू द वर्ल्ड दैट वी लिव इन.
Last point is that one helps us love and the other one makes us feel love or helps us to feel loved. Now, how does this work? Let's explore that. For example, when we are more open to the world, when we think from a solution perspective, we are more open and welcoming to other people, and we have the ability to love them. I'll give you some tips that will really help you get there. So let's take it point by point. First of all, offer to help. Now, when you offer someone help, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, he or she is not alone. So whenever you see someone in need, just ask if they need any help and offer them the help. Second is think from a solution perspective, again I would say, and not from a problem perspective. अगर आप प्रॉब्लम को उसमें सोल्यूशन है इस तरह से देखेंगे तो आपको सोल्यूशन आज नहीं तो कल डेफिनेटली दिखेगा. The next is be ready to accept love. Sometimes we become so independent and we create this barrier in front of us कि हम love accept करना ही भूल जाते हैं, या हम इतना खुद से और खुद में रह जाते हैं कि we don't see that there is love around that is being offered. So also keep yourself open to accept the love that you are already getting from the outside world, or you might be getting and you might be not looking at it. So try around and look for the love and be ready to accept it. Be more open to accepting that love. The next is when you need help, try looking around. आई एम श्योर कि आपके आजू बाजू कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको थोड़ी बहुत मदद कर ही देगा. सो डोंट गो टू फार व्हेन यू आर इन नीड और व्हेन यू नीड हेल्प. जस्ट लुक अराउंड. आई एम श्योर देर आर पीपल हु विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट. The next is try to be more codependent. I wouldn't say dependent on the other people, just be codependent instead of being extremely independent. It will help you survive better and it will help you build better connections to the people around you. The next is try and be open to change. Don't make yourself so fixed that अगर कुछ भी आपके आजू बाजू बदल रहा है तो you're not open to that change. Try and be more open to the change around you and engage in acceptance than criticism. To learn accepting some things that you can't change, then it really helps you deal with the situation and understand the situation better. So engage in more of acceptance rather than in criticism. Look at the things around you from a growth mindset and not a fixed mindset. Don't make yourself fixed कि नहीं मुझे यही करना है, नहीं मुझे यही चाहिए. Be open to options, be open to accepting and be open to what is being offered around you. So have a growth mindset and that will help you see and look at the situation in a better way. Lastly, I would say set smaller goals. अब जब आप small goals set करते हैं तो this helps you feel more achieved. Like rather than setting a goal that is 5 years long and feeling every day that oh my god I'm just not getting there, or oh my god I just can't do it. इससे अच्छा है set smaller goals, set goals that would be achieved on an everyday basis or an every week basis. That will help you feel कि आपने कुछ achieve किया है हर दिन, and that will keep you going to achieve more the next day and even more the next month and more every year or and so on. So set smaller goals and set practical goals. Don't set something that is very far to be achieved or very impractical. Set practical and smaller goals and it will help you feel better about yourself, feel more achieved, and it will in turn make you more open and accepting of whatever is happening around you. So that was it about positivity and openness. I hope you enjoyed the video and I'll be coming up with more such videos in future, and so see you next time. Until then, for more content you can log on to our website Plan My Health, and see you until next time. Bye bye.